First, with the help of these instructions, AX will be 4567. You know, maybe AX is a value of 1, 2, 3, 4. It will be deleted completely, and after the instruction it will be 4567. Similarly, if move BH, 12H, means 12H will be automatically stored into the BH. Same instruction is done by MVI and LXI in 8085, but over here it's done by MVI. If you are given over here 8-bit register, so your data will be also 8-bit register. If you given over here 16-bit register, so your data also will be 16-bit. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Please, This, sir, repeat once more time, sir. which one, sir? This is the last one, sir. Last one. If Yes, this sir. register is 8-bit wide, 8-bit का हो सकता है, Yes, 16-bit sir. का हो सकता है. जैसे A 8-bit का है, जैसे A Hmm. 16-bit का Six- रजिस्टर है. Yes, sir, 16-bit. मैं पिछला दिन बताया था क्या क्या रजिस्टर्स है. If I'm talking about the registers, then I describe the register also like this one. AX Yes. is AHAL, BX is BHBL, CX is Hmm. CHCL, and DX is DHDL. Is it clear? Yes, sir. So basically, if I am talking about the AX, so it will be 16-bit. If I am talking about the H or L or BH or BL individual, so all are 8-bit. So if you are Yes, given sir. over here 8-bit, so your data will be also 8-bit. If you are given over here 16-bit, so your data will be also 16-bit. जितना बिट का तुम्हारा रजिस्टर होगा उतना बिट का तुम्हारा डेटा भी देना पड़ेगा. Yes, sir. तो इसी का हिसाब से हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं उसी रजिस्टर में. Is it clear to all of you? Clear? I can proceed for next. Before I proceed, this is an example of immediate addressing mode. You are just write down. This is the example of immediate addressing mode. This is the example of immediate addressing mode. This is the example of immediate addressing mode. I'm repeat once again. This is the example of immediate addressing mode. Is it clear? It's clear to all? Yes, sir. Number two. Move CH comma AL. What will be happen? Same as like you know in 8085. Copy the content of AL into the CH register. Copy the content of AL into the CH register. Similarly, if you are doing like that, move AX comma BX. What will be happened? Copy the content of BX register into the AX. So copy may be 16-bit wide, maybe 8-bit wide. 8-bit का भी हो सकता है, 16-bit का भी हो सकता है. सेकेंड से कॉपी होकर फास्ट में आएगा. सेम एज 8085 मूव में जो हम लोग किए थे. क्लियर और नॉट? Yes, sir. This is an example of register addressing mode. This is an example of register addressing mode. You can write down this is an example of register addressing mode. सर नेक्स्ट हम लोग कोई मेमोरी लोकेशन से डेटा लाना और भेजना, क्या इंस्ट्रक्शंस था इन 8085 में? Sir, LDA. LDA and STA. LDA and STA, very good. So over here, these also done in a using move instructions, like move AH, comma within third bracket 4567. Move AH, comma within third bracket 4567. Can you see this my copy? It's a very important instructions. Everyone can see my copy?
Yes, sir. So, what are the function of these instructions? Say before the instructions, AH may be any value like 12. Okay. Say before the instruction, DS data segment is say A212. A212. Say, sir, you can see if if I'm telling about the pair, you can see I already described to you that pair is nothing but a just see DS also pair with direct. DS also pair with direct. Can you see this one? DS pair with direct. Huh? Yes. Sir. So DS can pair with direct. So this is a direct. Direct address is given. So physical address is equal to A212 into 10H plus 4567. What will be happen? A2120 plus 4567 all are in H. What will be happen, sir? 7, 8, 6 plus 2, 8, 5 plus 1, 6, 4 plus 2, 6, and it will be A. So this is the physical address. Is it clear or not? It's clear or not? Any queries? If you have, you can ask me. सर AX में तो 16 बिट डाटा होना चाहिए था ना. Eh? AX में 16 बिट होना चाहिए था ना. यहाँ Sorry, तो AX ना AH है. AH है. क्योंकि ये H लिखा हुआ है. Yes sir. AH होगा. A physical address is clear to all of you? सर एक बार रिपीट कीजिए ना. देखो move AH, 4567. 4567 I am not given through any kind of register like BX, like SI. No register is given. So I can say that this is used as a direct address, like LDA, like STA. Direct address is given. So this direct address is compare, generate the physical address with whom? किसके साथ direct का पेयर है? मैंने दिखाया था तुम लोगों को direct always pair with DS data segment. DS always pair with the data segment. तो data segment के साथ pair होगा. pair होने से क्या होगा सर? ये जो physical address है वो generate करेगा. हम assume किया A212 is stored into the DS. So A212 into 10H plus 4567 DS is a segment register. So segment address into 10H plus offset address. So segment address into 10H करने से 82120 plus 4567 total add करने से 46687. This is the physical address. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. So Yes, sir. in physical address A6687H maybe one data like AB is stored, previously stored. This AB data will be copied. This AB data will be copied. So after the instructions, AH will be AB and A6687 also AB and DS also A212. Is it clear? Is it clear to you? Yes. अभी बोलो एज के जगह में ऐसा भी इंस्ट्रक्शन हो सकता था मूव AX, 4567. Is it clear or not?
एच भी हो सकता था, एक्स भी हो सकता था. It's clear to all of you? It's clear to all of you? Yes, sir. So अभी प्रॉब्लम क्या होगा, ये मेमोरी लोकेशंस and the next memory location say A6688H is CDH. If I'm talking about the AX, this is say AX. So this is the AH, this is the AL. So it's maybe 3412. 3412. So it will be like in AX, AH, AL, something like CDAB. Sir, why CD? Why not CD over here, CD over here, and AB over here? Any idea? Bolo? Sir, lower higher memory order address, Bolo. higher order address store in higher फिर वो Actually, AX higher memory location. This is the higher memory location. If compare with the 87 and 88, 88 is the higher. So higher memory locations content will be stored into the higher, and lower memory locations content will be stored into the lower. That is the concept, lower. Yes, sir. right? So that Yes. H and L. So it may be 16-bit transfer. It may be 8-bit transfer. According to this register H or AX, this is maybe 8-bit, maybe 16-bit. Is it clear? It's clear to all of you? It's clear to all of you? Yes, sir. सर ये क्या होगा, मेमोरी लोकेशन से डेटा आएगा रजिस्टर में. Am I right? मेमोरी लोकेशन से आएगा रजिस्टर में. Is it clear to all of you? मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में आ रहा है. सर रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में कैसे जाएगा, बोलो अभी कैसा होगा. ये तो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में आ रहा है, मतलब एलडीए हुआ. तो एसटीए कैसे होगा, तीन का एग्जांपल है. बोलो थोड़ा बुद्धि लगाओ. इसको क्या करने से, इधर वाला तो ऑलवेज इधर में कॉपी होता है, तभी क्या करने से इसको उल्टा होगा. बोलो. ये सुबह वाला क्लास तो लेंगे नहीं. कोई कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है. सब सो गया क्या, को रोल कॉल करना पड़ेगा अभी. जितेंद्र बोलो. जितेंद्र पाल बोलो. Yes, sir. क्या करना पड़ेगा बोलो. इधर वाला इधर कॉपी हो रहा है. अभी हमको चाहिए मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में आया, अभी रजिस्टर से अभी मेमोरी लोकेशन में भेजना चाहता है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा. बोलो. किसी को नहीं, किसी का नहीं पता चल रहा है. इसे बुद्धि लगाना है और कुछ नहीं. बोलो. सर उल्टा कर देंगे, एक्स को उधर 4 5 6 7 को इधर. हाँ तो क्या क्या होगा, इंस्ट्रक्शन बोलो. मूव 4 5 6 7 एच मूव थर्ड ब्रैकेट 4 5 6 7 कॉमा 8 एक्स. comma x or h, whatever it is. It's very simple.
Very simple. This is the example of direct addressing mode. This is the example of direct addressing mode. Direct addressing mode. So 3 addressing mode we already described with example. Next, there are another instructions. Number 4, move AH comma within third bracket SI. Third bracket matlab related to with memory. Third bracket matlab related with a memory. So what will be happen over here? Tell me. Same thing like that. Same like that. So what will be happen over here? बोलो. सर इसमें भी डेटा सेगमेंट आएगा. डेटा सेगमेंट आएगा. क्यों आएगा बोलो पहले. सर क्योंकि एसआई के साथ पेयर डेटा सेगमेंट ही है. वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट क्या होगा बोलो. जो इधर किया था वैसे भी तो होगा. डालेंगे और फिर उसका वाला डाटा ट्रांसफर होगा उसमें. जैसे से बिफोर द इंस्ट्रक्शंस before the instructions say SI is 1 2 3 4 1 2 3 4, DS is 4 5 6 7, SI is 1 2 3 4 and DS is 4 5 6 7. So what will be the physical address? And say AH is say A. What will be the physical address? 4 5 6 7 into 10H plus 1 2 3 4. This is the physical address. So 4 5 6 7 0 plus 1 2 3 4. 4 A 8 6 4. 4 6 8 A4 H. This is the physical address. Content of this 4 6 8 A4 H. Say it's say 1 2. So it's a 1 2. So after the instruction AH will be 1 2. It's clear to all of you? Yes, sir. These also SI also replaced by BX. SI also replaced by BX. Okay. SI also replaced by BX. If SI is there, then the name is called index addressing mode. Index addressing mode, because source index, if SI and DI is used in any register, then this addressing mode is called index addressing mode. Okay. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. Actually, today I got some irregular students. That's why I think they are not given any kind of answer. Shohit Gaurav. Who is Shohit Gaurav? Till now, audio is not on. Only coming, that's why is on, means attendance is getting. Preeti Roy. Who is Preeti Roy? Yes, sir. सर क्लास प्लस में आई है. सर क्लास में ही है.
आज तो है, मगर बाकी दिन क्या हुआ? सर पिछले का क्लास छूटा हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्लास यही नहीं तो कर रहे मुश्किल, थे। इतना वीडियो कुछ दे रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं है जो वीडियो नहीं दे रहा है, वीडियो भी दे रहा है, तुम देखो उसमें बस कुछ सर क्वेरीज अब है देख लिए इसीलिए तो अटेंड किया है आज क्लास। तो हम तुमको क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से भी। यस सर। हाँ यस सर। कौन से चैप्टर से करे? सर कौन सा चैप्टर नहीं आप पढ़ाए उससे कर सकते हैं। हम तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, 8085 तो खत्म हो गया। 8085 सर। हाँ 8085 में कोई भी चैप्टर से। हाँ बोलो। बोलो कौन सा चैप्टर से करने से तुम्हारा सुविधा हो, हम उसी चैप्टर से करेंगे। What are the requirement of 8051 microcontroller and what are the difference of 8085 and 8051? What are the difference between 8085 and 8051? It's a very important one. The address bus of 8051 is 16-bit. The data bus is 8-bit. Address bus is 16-bit, data bus is 8-bit. Is it clear? Yes, sir. Next, you tell me what are the difference between 8085 and 8051? Address bus basically, Same. data bus Same, basically, sir. Same. address bus and data bus basically same. There is a no change of address bus and data bus. It's clear to all of you? Yes, sir. If I'm talking about the address bus and data bus are basically same, so what are the memory capacity of 8085? 64. But over here 64 KB into 2. Okay. Why and how I am coming? Yes, sir. So first question is that 64 KB into 2, why and how? 8085 basically create using von Neumann architecture, using von Neumann architecture 8085 basically create using von Neumann architecture. What are the von सर Neumann architecture? Huh? समझ नहीं आया सर वही चीज। Von Neumann architecture, what is a von Neumann architecture? I am just describe you. Von Neumann architecture, what is a von Neumann architecture? Say this is a CPU. There is a memory. Memory means it may be program memory, it may be data memory. There is a no distinguish between program memory and data memory. Only one address bus and another data bus is connected. Sir, or in a generalized बोले तो सर हम लोग 8085 में कभी कभी प्रोग्राम भी लिख सकते थे 8500 से, कभी इनपुट भी लिख सकते थे 8500 से. Am I right or not? Yes, sir. ऐसा कोई डिविजन्स था जो इधर से इधर हम लोग प्रोग्राम लिख सकते, इधर से इधर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते थे? हम बोले थे कभी जो ये लोकेशंस में रिजर्व फॉर द प्रोग्राम, हिज लोकेशन इज रिजर्व फॉर द डेटा? No, sir. So that's why this is a von Neumann architecture. There is a no distinguish between program memory and data memory. जिधर प्रोग्राम लिख सकते हो उधर इनपुट आउटपुट डेटा भी रख सकते हो, जिधर प्रोग्राम लिख सकते हो उधर इनपुट एंड आउटपुट डेटा भी रख सकते हो. That is the von Neumann architecture, which are created using the 8085. It's a von Neumann architecture. Von Neumann architecture is nothing but a creating the 8085 and all the other processor. That is, there is a no distinguish between program memory and data memory, where you can write program, where you can store the data also. So this is a von Neumann architecture. Next, 8051 basically creating the hardware architecture. What is the hardware architecture? सर एक्सक्यूज मी सर, Yeah. जो अभी आप बोले ना वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, सर उसे प्लीज पेज पे लिख देंगे, हम लोग को थोड़ा ज्यादा मतलब कि आसानी हो जाएगा समझने में। हम स्लाइड में आ रहे हैं, हम स्लाइड में आ रहे हैं, यस सर। स्लाइड में आएंगे, तुमको ये हम दिखा रहे हैं, स्लाइड में हम आएंगे, हम रेडी करके ही रखे हैं.
आपको, हम थोड़ा समझा देते हैं, इसी के बाद ही हम आएंगे with respect to all those things. टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड मैंने बनाया था एट द बीटेक लेवल इन थर्ड ईयर, टिल नाउ इट इज कंटिन्यू. Von Neumann architecture, this is the Von Neumann architecture, whereas program memory and data memory are same. Okay, all of you can see. Yes, sir. So this is Von Neumann architecture, where program memory and data memory basically same. There is a no distinguish between program memory and data memory, where you can write the program, where you can write the data. Whereas in Harvard architecture, which is basically creating the 8051, here program memory and data memory are different. Here program memory and data memory is different. Where you can store the program in that particular location, you cannot store the data. Program memory and data memory is different. Program memory is stored over here, and data memory is stored over here. Separate program address bus and separate data bus. Separate address bus and separate data bus. So what will be the advantage? So yeah, दोनों 8051 में ही होगा, मतलब ना A8051 में, A8085 में. ओके, मैंने अभी दिखा रहा हूं तुमको 8085 में क्या था, 8051 में क्यों आ रहा है, क्या है इसमें एडवांटेज, क्या डिफरेंस है, क्या कम कर सकते हो 8051 से, वही हम आ रहा है अभी. सर ये MCU का मतलब क्या है? MCU मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, किधर है सर? ऊपर में लिखा हुआ है. ओ माइक्रो कंट्रोलर यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट. माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एक्चुअली MCU, MPU হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর ইউনিট. ओके सर. So actually Von Neumann architecture is basically for 8085. Harvard architecture is basically for 8051, where program memory and data memory is separate. It's clear to all? यस सर. देखो प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी सेपरेट होने का कारण, इधर में 64 किलोबाइट होगा, इधर में 64 किलोबाइट होगा. दैट्स व्हाई मैंने जब पढ़ा रहा था मैंने बोला है, देखो 64 केबी इंटू 2 दैट इज 128 किलोबाइट. यस सर. So same address bus but memory is twice, 64 kilobyte for program memory, 64 kilobyte for data memory. Here all the address are two, so 0000H, one is for program memory, one is for data memory. So 0001, one is for program memory, another is for data memory. Is it clear to all of you? सर एक बार रिपीट कीजिए ना. Here देखो प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी आर सेम, माने एक ही जगह में जो होगा प्रोग्राम वही होगा डेटा. सो देयर इज अ नो डिस्टिंग्विश. बट इफ आई एम कंपेयर विद दिस CPU, this CPU the Harvard architecture, program memory and data memory is separate. So program memory is 64 kilobyte and data memory is 64 kilobyte. So together is called 128 kilobyte. Here program memory मान के चलो 0000 to FFFF प्रोग्राम मेमोरी भी है, 0000 to FFFF डेटा मेमोरी भी है. मतलब एक एक एड्रेस दो बार करके है. 0000H एक प्रोग्राम मेमोरी के लिए है, एक 0000H एक डेटा मेमोरी के लिए है. ओके सर. सो साथ में दो डेटा मेमोरीज होगा, मतलब भेजेंगे तो दोनों में एक एक. किसे समझ में नहीं आया? मतलब सर जैसे 00 जो भी है, मतलब एक वो एक प्रोग्राम के लिए है, एक हाँ, डेटा एक मेमोरी डाटा के लिए, तो साथ में दो भेजेंगे इसमें ना 8051 ना में. प्रोग्राम दूसरा जगह में लिखोगे, डेटा दूसरा जगह में लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग है, पूरा कंप्लीटली अलग है. अभी डिस्टिंग्विश कैसे होता है, कैसे प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी डिस्टिंग्विश होता है, कैसे अलग होता है, दैट विल बी डिस्क्राइब व्हेनेवर आई एम डिस्क्राइब द पिन कॉन्फ़िगरेशन, फंक्शन ऑफ ईच पिन. अच्छा, I want to know something from you, one commitment from you, that microcontroller maybe 40% or 50% is available in your syllabus, maybe. Sir,
हाँ नॉट बोलो। इसमें जो आर्किटेक्चर है इसमें तो डेटा मेमोरी और ये डेटा मेमोरी और जो आपका प्रोग्राम मेमोरी में दोनों तो सेपरेशन है नहीं, तो फिर हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा मेमोरी एंड इधर प्रोग्राम? में सर, इधर में यस सर, यस सर। तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यही तो हम बोला पहले। जो 8085 में तुम प्रोग्राम लिख सकते हो 8500 में, डेटा भी स्टोर कर सकते हो 8500 में। इसीलिए तो बोला देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली फॉर दिस रीजन, von Neumann आर्किटेक्चर के लिए देयर इज नो सेपरेशंस। तुम प्रोग्राम मेमोरी जिधर में लिख सकते हो उधर डेटा मेमोरी भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है। तुम प्रोग्राम लिखना चाहते हो प्रोग्राम लिखो, तुम डेटा में लिखना चाहते हो डेटा लिखो। मगर इधर में डिफरेंस है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, प्रोग्राम मेमोरी डिफरेंट एंड डेटा मेमोरी इज डिफरेंट। It's clear to all of you? यस सर, Huh? यस सर। Any queries? Queries है तो बताओ। तब तो सर एडवांटेज यही होगा कि हम हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर वही यूज करेंगे। हाँ अभी अभी जो जो हम बोलेंगे ना सारा एडवांटेज बोलेंगे, लास्ट में एक जगह में हम अटक जाएंगे। आएंगे, वेट करो भाई, आज क्लास में सब जान जाओगे क्यों 85 क्या 85 में है, क्या 8051 में है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, next memory. So memory capacity is with respect to 8085 it's a twice, as it's a Harvard architecture, right? यस सर। Okay. सर 8085 का एक नाम है, क्या नाम है बोलो तो? एक भगवान का नाम मैंने दिया है उसको, जगन्नाथ। जगन्नाथ। क्यों? जगन्नाथ। कि क्यों? उनका हाथ पैर नहीं है। मतलब माइक्रोप्रोसेसर itself a body, nothing else, only it's a body, nothing else. तुमको Yes, sir. कुछ भी चाहिए सो बाहर से लगाना पड़ेगा। Like if I am going into the previous slide, this is my first slide, just coming, it is a microprocessor, क्या क्या है, just see this is a microprocessor unit, this is a CPU, all are connected externally, RAM, ROM, printer, disk, monitor, keyboard, everything, IO port, everything should be connected externally, everything should be connected externally. But just see, RAM, ROM, IO port, timer, serial port, all are connected externally. But if I am talking about the microcontroller, all are inbuilt, all are inbuilt. इसका एक एग्जांपल हम तुमको देंगे। तुम लोग कभी मदरबोर्ड देखे हो? तुम्हारा तो कंप्यूटर है, मदरबोर्ड कभी देखे हो? Yes, sir. यस सर। इतना बड़ा बोर्ड होता है, इतना बड़ा बोर्ड होता है, am I right? Yes, sir. इसमें बहुत सारा आईसीज रहता है, सिर्फ एक प्रोसेसर रहता है, either Pentium 4 or you know whatever you have, maybe i5, maybe i7, maybe you know i10, whatever it is, but only one processor, rest all are the peripheral. That is the main disadvantage of microprocessor or processor, whatever you say, that you are connected, all are externally, RAM, ROM, IO port, timer, you know, serial controller, all are connected externally, and it's a create a big circuit. Similarly, if you see the microprocessor kit, it's also in a big size, just like your laptop is a big size. It is not a small size. Only one processor is there of 8255. Rest all are the peripheral IC, means helping hand ICs. Is it clear? It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। माइक्रोकंट्रोलर के अंदर जो सारा चीज बोला सारा इनबिल्ट रहता है, all are available in the chip itself, all are available in the chip itself, RAM, ROM, IO port, all are available in the chip itself. It's clear to all? Yes, sir. So basically RAM, ROM, you know, all are connected externally, all are connected externally. So that's why this size is, you know, big size, and this is a small in size. Okay, Small engine. is it clear or not? Yes, sir. Sir, can you recall the clock frequency of 8085?
Clock frequency of 8085? 3 to 5 Sir, megahertz. 3 to 5 megahertz. Huh? 3 to 5 megahertz. 5 to 10 megahertz for 8086, 3 to 5 megahertz 8085. for 8085. Can you see my copy? Yes. Three to 5 megahertz. And clock frequency of 8051 is 12 megahertz. मेगाहर्ट्ज सर कितना टाइम्स होगा लगभग इसके हिसाब से इसका 5 पकड़ के ही चलो 5 से कितना ज्यादा है 4 हाँ 2 times. नियर अबाउट 2.5 टाइम्स हेलो Yes, sir. 2.5 something, yes, sir. या टेल मी 2.5 टाइम्स Sir, 2.4. ओ व्हाटएवर इट इज सर 3 हम तो पकड़े नहीं ना 3 पकड़ेंगे तो और ज्यादा 4 टाइम्स हो जाएगा Yes, sir. हम इन एवरेज बोल रहे हैं हम तुम्हारा एजम्पशन के लिए ये कोई मैथ से नहीं करेंगे इससे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा Time period decrease. Time period decrease हो जाएगा मतलब machine will be faster. machine will be faster. So microcontroller is so much faster with respect to 8085. Am I right or not? Yes. 8051 is a faster than 8085 with respect to the clock frequency, as well as with respect to the von Neumann architecture. Why, sir? At a time, program and data both can access. Is it clear? So microcontroller is faster than 8085. 8051 is faster than 8085. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, सर sir. एडवांटेज में क्या क्या बोले पहला एडवांटेज है सेम एड्रेस बस बट ट्वाइस मेमोरी कैपेसिटी एम आई राइट Yes, sir. सेकंड एडवांटेज सर Size. you know it's a von Neumann architecture, it's a hardware architecture. Hardware is advantage, lot of advantage of with respect to faster and all, so it's a hardware architecture. This is another advantage. Yes, Next sir. is speed is not less than 2.5 times, near about 2.5 times or more than that. So it's a faster, it's a slower. Is it clear? Yeah. Yes, sir. माइक्रोप्रोसेसर में तुम काम करोगे तो सर्किट कितना बड़ा होगा बल्क इन साइज Large. Yes, लार्ज sir. साइज होगा जैसे मदरबोर्ड हुआ जैसे तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर का किट हुआ बट माइक्रोकंट्रोलर ऑल आर इनबिल्ट देखो इसके सारा अंदर सारा कुछ रहता है Small जैसे in आईओ size. पोर्ट रैम रोम सब सारा कुछ रहता है ये सारा कुछ रह के भी इसका Yes, आईसी है 40 पिन का एक आईसी है 40 पिन का एक आईसी है Yes, Is sir. it Small clear? in size. Yes, sir. स्मॉल इन साइज वेरी स्मॉल इन साइज अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर का किट का कॉस्ट कितना जानते हो जो कॉलेज में यूज होगा व हो रहा है 20,000. हाँ? 20,000. 20,000 क्या सर? कॉस्ट कितना है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का किट का तुम्हारा मदरबोर्ड का कितना कॉस्ट है 1200. मदरबोर्ड 1200 रुपया में 1200-1500 होगा सर. मदरबोर्ड मिलेगा नहीं सर मदरबोर्ड का कॉस्ट ज्यादा है कंप्यूटर में कॉस्टली चीज क्या है सिर्फ मदरबोर्ड ही है Yes, sir. सो मान के चलो किट का कॉस्ट ये का कॉस्ट हम पकड़ रहे हैं 10,000 ही है आसपास
तो एक माइक्रोप्रोसेसर का किट का कॉस्ट, एक मदरबोर्ड का कॉस्ट 10,000 रुपीज है। एम आई राइट? अभी बोलो सेम कॉन्फ़िगरेशन एक लैपटॉप है एक डेस्कटॉप है, कौन सा ज्यादा कॉस्टली होगा? लैपटॉप। क्यों लैपटॉप। सर? लैपटॉप्स क्यों सर? क्योंकि लेस साइज है। मतलब स्मॉल इन साइज, पोर्टेबल, देखने में सुंदर है, इसके लिए ना। यस सर। तो स्मॉल इन एक साइज बट मतलब जो भी सारा चीज होता है उसी में इनबिल्ड रहता है। इनबिल्ट रहता है, मतलब देखने में छोटा है, यही तो है ना। मतलब तुम इधर उधर लेकर जा सकते हो, इसलिए तो लैपटॉप का कॉस्ट ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द डेस्कटॉप। यस सर, कैरी सेम इजीली कर कॉन्फ़िगरेशन सकते हो, हैं कहीं भी। इजी टू कैरी। कैरी भी यस सर, कर इजी सकते टू हो, कैरी। इजी टू कैरी। साइज स्मॉल होने से बहुत सुविधा हो। तो अभी एक माइक्रो कंट्रोलर के जगह में, एक माइक्रो प्रोसेसर के जगह में एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, 40 पिन का आईसी होगा, जो छोटा देखने में साइज होगा, इसका कॉस्ट 10,000 है। तो इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए? डबल। डबल होगा। मोर देन 10,000, ये तो हम बोल सकते हैं। यस सर। मोर देन 10,000, यस सर। more than 10,000. Okay, is it clear or not? ये समझ में आया 10,000 से ज्यादा क्यों दाम होना चाहिए था? हाँ सर, समझ गए। मगर माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल इन द मार्केट 39 रुपीज ऑनवर्ड। 100 रुपया दोगे तो बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा। 39। 39 रुपीज क्या ऑनवर्ड। सर? 39 रुपीज ऑनवर्ड ओनली। ओनली। भाई 100 रुपया दोगे तो बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर मिल जाएगा। अभी बोलो कॉस्ट इफेक्टिव कौन है? माइक्रो कंट्रोलर। इसीलिए कंट्रोलर। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है आज का डेट में। मैक्सिमम चीज जो बनता है माइक्रो कंट्रोलर से ही बनता है। क्यों? मान के चलो तुम्हारा रूम टेम्परेचर एक मेजरमेंट सिस्टम बनाओगे, तुम माइक्रो प्रोसेसर से बना रहे हो, हम माइक्रो कंट्रोलर से बना रहे हैं, जो मार्केट में सेल करना है। तो तुम एक किट खरीदोगे, उसका कॉस्ट पड़ जाएगा, और मदरबोर्ड खरीदोगे जो भी है 10,000 रुपया पड़ जाएगा। अभी 10,000 के बाद तुम उसमें सेंसर लगाओगे 100-200 रुपया का, मार्केट में सेल करोगे सबसे लोएस्ट में, तो एकदम मतलब कुछ बेनिफिट ही नहीं ले रहे हो 11,000 रुपया में, क्योंकि तुम्हारा लेबर है, सब यस कुछ सर, है, सब कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर जाएगा। एंड हम माइक्रो कंट्रोलर से बनाएंगे तो 200 रुपया के अंदर हो जाएगा, हम मार्केट में 500 रुपीज में सेल करेंगे, सेल भी ज्यादा होगा, देखने में भी छोटा है, और सबसे अच्छा चीज है हमारा प्रॉफिट भी नियर अबाउट मोर देन 100% होगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। इसीलिए सर माइक्रो कंट्रोलर का दाम इतना कम क्यों है जब इसमें इतना बेनिफिट है तो? VLSI टेक्नोलॉजी से बनाया है इसको, इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसी के कारण माइक्रो कंट्रोलर इतना सस्ता में मिलता है। अभी हमारा एक क्वेरीज है, तुम लोगों का तो क्वेरीज होता नहीं है, मगर हमारा बहुत क्वेरीज होता है, क्यों पता नहीं है, क्वेरीज ज्यादा हो जाता है हमारा, इसीलिए तुम लोगों का भी अच्छा नहीं लगता, हमारा भी अच्छा नहीं लगता। तो क्वेरीज एक आया है मन में, अभी तुम लोगों को करेंगे, तुम लोग आंसर दोगे, क्योंकि तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा। टिल टुडे वी आर यूजिंग Pentium 5, Pentium 7, Core i5, Core i7, Pentium 4. Why not it replaced by a microcontroller? My question is clear to all of you? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हो तो पहले बोलो क्वेश्चन, हमको तुमको क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरा दिखा जाएगा। हाँ सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन एक बार और बोल दीजिए। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से सारा दिख से इंपॉर्टेंट है, माने सारा दिख से इसका एडवांटेज है। एम आई राइट? Till today we are purchasing Pentium 5, Core i5, Core i7. Why not it's replaced by a microcontroller? हम आज Pentium 4 और Pentium 5 और Core i5 और Core i7 हम ना खरीद के हम ये यूज करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, तो हमारा कॉस्ट बहुत कम में हो जाएगा, लैपटॉप हमारा मिल जाएगा 2,000, 2,500, 3,000 में।
My question is clear. बोलो. सर मे बी ओवरहीटिंग के कारण. Overheating? No. I think, sir, microcontroller cannot work many programs at a time, and storing और या programming दोनों अलग अलग नहीं हो सकते. Storing और जैसे इसमें ड्राइव होता है ना सर, हाँ. मेमोरी जो मतलब कहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या भी कोई भी फाइल होता है उसमें में भी उतना कम्पैक्ट साइज में नहीं होता होगा. होगा सब होगा. एक ही प्रॉब्लम है जो पहला तुम बोल रहा था मगर उसका क्लियर नहीं बोल पाया. Microcontroller is always install only one software. Ankita, you have a laptop or desktop, whatever. लैपटॉप है. इतने कम उम्र में लैपटॉप मिल गया. वाओ, वेरी गुड. Congratulations, Ankita. Ankita, I have a question to you. How many software available in your laptop? सर आवाज नहीं आ रहा. आवाज नहीं आ रहा है. ये समीर का हर एक दिन यही प्रॉब्लम होता है. समीर तुम म्यूट हो जाओ, तुम्हारा कारण नॉइज आ रहा है शायद. नॉइज मेरे कारण नहीं आ रहा है सर. आप ना, हमारा तो कोई नॉइज आने का कोई ये नहीं. हम वायर कनेक्टेड, नॉट एनी ये कनेक्टेड, वाईफाई कनेक्टेड. क्या बोल रहा था, भूल गया सब. अंकिता का लैपटॉप है. अंकिता का लैपटॉप है. अंकिता के पास हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन योर लैपटॉप. जैसे वर्ड हुआ, जैसे एक्सेल हुआ, जैसे अंकिता का आवाज आ रहा है, नॉइज आ रहा है. हाँ बोलो नंबर सोच के एक बार बताओ. जानते हो? Sir, I think million numbers. मिलियन. सॉफ्टवेयर तो एक ही होता है ना, ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक हो गया. छोड़ के भी तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है. पीडीएफ एक है. हाँ सर. ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है ना. वर्ड फाइल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है. गेम खेलने के लिए 4 सॉफ्टवेयर लगाया है. ग्राफिक्स भी है, वो है बहुत. कितना है सर बुद्धू? इसको बोलता है कॉन्फिडेंस. तुम कुछ भी बोल दो ना, 37, 38, 58, 52 ऐसा कुछ बोल दो ना. हम तेरी ना गिनती करने जा रहे हैं. 45. 35 बोलोगे, 40 बोलोगे, 50 बोलोगे तो हम पकड़ेंगे ये गलत बोल रहे हैं. झूठ बोलना तो कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा बोलना जैसे लगे हाँ ये सही बोल रहे हैं, गिनती करके आया है. सर 33. आई सोचना मत. से तुम्हारे लिए 30 है. जॉय के लिए कितना है जॉय? सर बहुत नॉइज हो रहा है सर. 13. जॉय तुम्हारे लिए कितना है? 15. 15 ऐसा मत बोलो. कोई और नंबर में बोलो तो लगता है ना ये ठीक बोल रहा है. जो भी है, जॉय के लिए 15 है, अंकिता के लिए 33 है, हमारे लिए 103 है. तो हर एक के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन द कंप्यूटर. इफ आई एम रिप्लेसिंग बाय ए माइक्रोकंट्रोलर, सो अंकिता का लगता था 33 माइक्रोकंट्रोलर, जॉय को लगता था 15 माइक्रोकंट्रोलर, हमको लगता था 103 माइक्रोकंट्रोलर. कितना सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते थे? मतलब इंस्टॉल कर सकता हूँ हमारा कंप्यूटर में n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर. तो माइक्रोप्रोसेसर को माइक्रोकंट्रोलर से रिप्लेस करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रोकंट्रोलर लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा. एक एक सॉफ्टवेयर एक एक माइक्रोकंट्रोलर में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं है. एक माइक्रोकंट्रोलर में एक ही सॉफ्टवेयर तुम लगा सकते हो, मतलब एक ही प्रोग्राम तुम रन करा सकते हो. से इफ यू वांट टू मेजर योर टेम्परेचर फॉर योर रूम, say for one microcontroller is using. If not possible, you are these microcontroller may be used for your on or off your light and fan. So you need another microcontroller if the program is different. If the program is the same, it can be possible. If program is different, so you connect and a different microcontroller. So different purpose, different microcontroller means
जो प्रोग्राम तुम लिख रहे हो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए रूम के लिए, उसी माइक्रो कंट्रोलर को रीराइट करके मतलब इरेज करके फिर दोबारा प्रोग्राम लिख सकते हो फॉर लाइट फैन ऑन एंड ऑफ। ये पॉसिबल है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अभी एक क्वेश्चन तुम लोगों को और है। प्रोग्राम लिख सकते हो मतलब एक तो आईसी देगा, आईसी के अंदर कैसे प्रोग्राम लिखोगे? मतलब जैसे सीडी में बार्न होता है, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हो, ऐसे ही आईसी के अंदर भी प्रोग्राम तुम लिख सकते हो, प्रोग्राम तुम बार्न कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें यूएसबी केबल से इंसर्ट कर देता है। यूएसबी केबल कैसे मिलेगा? कैसे तुम एक आईसी को यूएसबी केबल में लगाओगे? तो जैसे आर्डिनो यूएनओ बोर्ड में आर्डिनो आर्डिनो प्रोग्रामिंग वाला जो होता है ना सर, वैसा ही ना हो सर? वो बोर्ड का नाम क्या है? बोर्ड का तो कुछ नाम होगा। यूएनओ बोर्ड। एक्चुअली तो सीडी किसको किस में राइट करते हो? डीवीडी प्लेयर। प्लेयर ना, उसका और एक नाम है, एकदम एग्जैक्ट नाम बताओ। ड्राइवर राइटर। नो नो, सीडी राइटर, एग्जैक्टली सीडी राइटर। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली ये आईसी बार्न करने के लिए आईसी भी एक राइटर मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्नर, आईसी बर्नर। आईसी बर्नर से तुम आईसी को भी बार्न करा सकते हो। इज सर इट रिपीट क्लियर? ये आईसी जो बर्नर होता है, आईसी बर्नर से भी तुमको आईसी को बार्न करा सकते हो, आईसी के अंदर प्रोग्राम डाल सकते हो। जैसे सीडी के अंदर लिखने के लिए सीडी बर्नर में सीडी घुसा के उसके अंदर बार्न करते हो, ऐसे आईसी बर्नर मिलता है जो आईसी बर्नर में तुम आईसी बिठा के उसमें तुम बार्न कर सकते हो, चाहे रॉम, चाहे एवीआर हो, चाहे पीक हो, चाहे 8051 हो, जो भी माइक्रो कंट्रोलर है सारा के लिए सारा एक ही फंक्शन है। सिर्फ तुमको बर्नर चाहिए। अभी बर्नर ऑनलाइन में भी मतलब ऑनलाइन बोलता है, एक्चुअली ऑनलाइन कुछ होता नहीं है, बाहर में तुमको एक डिवाइस लगाना पड़ता है फॉर वार्निंग एंड ऑल। जो तुम लोग बोल रहे हो यूएसबी केबल से लगता है, वो एक्चुअली बर्नर का काम करता है, आईसी बर्नर। इज इट क्लियर? बर्नर बोले तो कुछ जलाने वाला चीज होता है क्या? जलाने वाला चीज होता है, राइट। जलाने वाला चीज मतलब बर्न करता है, उसके अंदर लिखता है, इसीलिए बर्न बोलता है। देखना सीडी में जब राइट कर रहे हो उसमें भी बर्नर बोल के एक वर्ड आता है, बर्न कर रहे हैं मतलब उसके अंदर लिख रहे हैं। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Can I proceed? यस सर। यस सर। अभी तुम लोग सोच रहे हो सर तो बोल दिया 39 रुपीज एंड 100 रुपीज में मिल जाएगा। अभी और भी एक बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से बहुत सारा स्टूडेंट लोग एवीआर आर्म के ऊपर काम करता है, मगर 95% स्टूडेंट डजंट नो व्हाट आर द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या काम कर रहा है? कोई नेट से करता है कॉपी, उसको उसके अंदर बांध कर देता है, मगर वो प्रोग्राम का लाइन का क्या फंक्शंस है, क्या काम करता है, उसके चलते दूसरा कोई देने से क्या चेंजेस होगा, ये समझ में नहीं आता है। वो एवीआर तुमको एकदम पता ही नहीं चलेगा जब तक तुम 8051 नहीं पढ़ोगे। पहले 8051 स्टेप है ऐसा, पहले 8085, देन 8051, देन पीक, देन एवीआर and ARM. Is it clear to all of you? Maximum program they are written in a C, but C not our language. C may be IT department. Our language is assemble level language for EC and electrical. Assemble level language is a mother language. Assemble language, whatever I am describe, move, MVI, all are assemble level language. Most of the students is write in a C. Am I right? कौन कौन प्रोग्राम करते हो बोलो एवीआर में? यही तो साइलेंट हो गया। अरे हाँ बोलो ना, हम तुमको कि खा जाएंगे।
सर प्रोग्रामिंग एक चीज होता है, ये मतलब पता चला था ये सी प्रोग्राम के चलते थ्रू ही पता चला सर। मतलब सी प्रोग्राम सही करते हो कि नहीं? यस सर। हर हम मैंने तुमको बोल रहा हूँ, हम तो बहुत सारा बैचेस को पार किया। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को ही देखता है, वो जो प्रोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ जानता है ये प्रोग्राम करने से ये काम करेगा, वो बांड करा देता है, बस हो गया। मगर वो हर एक लाइन क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, प्रोग्राम तुमको लिखना है तो कैसे लिखोगे, यही तो इंजीनियर का काम। वो तो काम है एवीआर में एक प्रोग्राम बांड करने, एक तो मतलब एक वर्कर का काम है प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम चेंज करना, दैट इज द मोटो। अच्छा, तुम लोग को एक चीज जानना चाहता है, जो आई वांट टू रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मींस मैक्सिमम स्टूडेंट्स। I don't know. I will be see the syllabus today of 8051. Maybe your syllabus maybe 40% or 50% is there. Can I teach 100%? 100%। Yes, sir. Yes, sir. It's Yes. take more Yes, sir, time, of course. but Yes. you will be learn a lot of 8051. With the help of 8051, you can create a circuit in your future. And your project maybe you have in a coming semester, it can be done using microcontroller. With the help of microcontroller you can do anything whatever you can. जब तुम लोग सीख जाओगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा माइक्रोकंट्रोलर से होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा कुछ होता है। सारा कुछ जो तुम बनाना चाहते हो, क्या रोबोट बनाना चाहते हो, क्या कुछ बनाना चाहते हो, सारा कुछ इज पॉसिबल फॉर माइक्रोकंट्रोलर। एंड कॉस्ट क्या है देखो, 39 से 100 रुपीज। सो ये 100 रुपया में तुम्हारा एक माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा। तो इज अ वेरी वेरी चीपेस्ट, तुम कुछ भी सर्किट बना सकते हो। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी है जो तुम लोग घर में बना के देख सकते हो, घर में करके देख सकते हो, उसका नाम है प्रोटियस। उसका नाम है प्रोटियस। पिछला बार एक ग्रुप था तुम्हारा, पास आउट 4th ईयर इसी, मैंने तुम लोग को बोला था भी, उन लोगों का भी यही माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर प्रोजेक्ट था, वो लोग भी प्रोटियस से बनाया था। क्योंकि लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं हुआ था हार्डवेयर, मगर प्रोटियस से सारा कुछ एकदम पूरा जैसा होता है ऐसा एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम। वो लोग प्रोग्राम भी अपना सीख गया, प्रोग्राम भी चेंज करते रहते थे नहीं खुद से। तो कॉन्फिडेंस तुम लोगों के पास होना चाहिए, सो दैट यू कैन विल बी गेट द चांस टू राइट द प्रोग्राम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रोटियस क्या है, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्या? नो, सॉफ्टवेयर है, उसमें तुम लोग सर्किट बना सकते हो। जैसे तुम लोग सर्किट बनाते हो सोल्डरिंग करके ना, Yes, sir. Yes, हाँ sir. अभी तो सोल्डरिंग करना बस, सर्किट खरीदना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक। तो प्रोटियस एक डाउनलोड कर लो फ्री सॉफ्टवेयर, उससे तुम लोग सर्किट बनाओ, प्रोग्राम लिखो, आराम से काम करेगा। इट्स क्लियर? Yes, sir. यस। सो माइक्रो कंट्रोलर के एक डिसएडवांटेज, मैक्सिमम एडवांटेज, ओनली डिसएडवांटेज, ओनली वन सॉफ्टवेयर कैन रन, अदर सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज कारण क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम काउंटर इज सेट ऑलवेज 00008। 8085 में प्रोग्राम काउंटर में कोई भी स्टोर कर सकते हो। कैसे सर? हम लोग तो कंप्यूटर में कभी करते नहीं है। जब तुम कोई सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक कर रहे हो, मतलब प्रोग्राम काउंटर में वो सॉफ्टवेयर कौन सा मेमोरी लोकेशन से लिखे हैं, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा। जो मेमोरी लोकेशन में तुम लिखे हो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम आ जाएगा इसमें, प्रोग्राम काउंटर में, एंड वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा रन कराएगा। यही है फंक्शन। मगर इधर में तुम प्रोग्राम काउंटर में तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, हर एक टाइम इट्स 00008। इट्स क्लियर टू ऑल? It's clear Yes, to all? sir. Yes, sir. Next. So this is difference between 8085 and 8051. सर इसको एक बार रिपीट कीजिए ना सर। कौन सा को सर? ये प्रोग्राम काउंटिंग। प्रोग्राम काउंटर वाला। वेरी गुड।
सर एक्चुअली क्या होता है ना, तुम्हारे पास 50 तो सॉफ्टवेयर है, राइट? यस सर। ये तुम्हारा लैपटॉप में जब भी तुम उस सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हो। यस सर। डबल क्लिक मतलब वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई एक मेमोरी लोकेशन से लिखा हुआ है, वो जो मेमोरी लोकेशन से लिखा हुआ है उसी का एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है। प्रोग्राम काउंटर in the form of 8085 in 8086, it's a CSNIP, whatever it is a program counter you can say. So in a program counter जब भी तुम डबल क्लिक करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसका जो एड्रेस इट इज कमिंग इनटू द प्रोग्राम काउंटर। एंड प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, जो भी कोई एड्रेस आएगा उसी को एग्जीक्यूट कराना, तो वो एग्जीक्यूट करा देगा। मगर 8051 में डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू यू कैन नॉट चेंज, इट इज अ फिक्स्ड। एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग इट्स अ फिक्स, जब तुम एकदम प्रोग्राम लिख रहे हो उसी में फिक्स्ड कर देना है। तुमको ऐसा डबल क्लिक करके तुम प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसमें 0000 ही रहेगा। इसको इन 8051 ना सर? 8051 सर फिक्स क्यों रहता है? हैं? फिक्स रहता है इसी के लिए, इसका कोई कीबोर्ड नहीं है, इसके साथ कोई इंटरफेसिंग नहीं है जो प्रोग्राम काउंटर के साथ को कर सकता है। जो अंदर में जो इनबिल्ट है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इनबिल्ट में क्या ना, एक सर्किट बनाया, सर्किट में पहले से ही बोल दिया जो प्रोग्राम में जिदा से शुरू करना चाहता है वो फिक्स्ड है, उससे छोड़कर दूसरा कोई प्रोग्राम में बार्न नहीं कर सकता। बार्न करके हुए कोई फायदा नहीं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट चलो। सर तो क्या माइक्रो कंट्रोलर में अलग से हम लोग कीबोर्ड माउस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है? ना, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मगर लगाने का जरूरत नहीं है। The difference between microprocessor and microcontroller, I already told to you. It cannot use small circuit system, RAM, ROM, all are connected. It's connected itself. इसको बाहर से लगाना पड़ता है, सारा कुछ दिया हुआ है। These are the applications of microcontroller. These are the applications of microcontroller. Toothbrush, स्विच दबा दोगे तो ब्रश हो जाएगा, ऐसे तुमको ब्रश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। All are using microcontroller. Before going into this, this is a robot dog using microcontroller. Before going into the next, I want to describe why it's a 5.1 is a very important one. It's a very, very important. Why 8085 is important? 8085 is important. Basically, all the processor create in the basic of 8085, basis of 8085. But in the all the microcontroller like PEEK, ARM, everything is creating using basic is 8051. So 8051 means kya? This is just like a brand. In 51 there are several ICs there in the in the market. Several, I think more than 200 ICs, more than 200 200, more than 1 lakh ICs available in the market, which are known as a 8051. Name is different, say 89C51, 89S52. All the ICs basically are follow the same instructions and same architecture, same everything. That's why it's a called 51 family member. That's why it's a called 51 family member. Is it clear to all? It's clear to all? Yes, sir. No, sir. 51 फैमिली के अंदर बहुत सारा आईसीज है, अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम लोग जैसे बोलते हैं 8085 इज 8 बिट प्रोसेसर, 8086 इज 16 बिट प्रोसेसर, ऐसा 8051 इज 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर। 8 bit microcontroller. Data bus depend upon the data bus and ALU. If data bus and ALU is 8 bit, so it will be 8 bit microprocessor or microcontroller. Similarly, these are the 4 bit microcontroller. These are the 4 bit microcontroller. And we are talking about these are the name, model name. These are the pins and IO lines. And we are talking about the 8051. In 8051, I'm just telling you, 8051, it's also a 40 pin. How many pins are there? How many pins? 40 pins. Out of these 40 pins, 32 pin
is dedicated for IO port. For IO port. 4 IO port. 4 IO port. P0, P1, P2, and P3. P0, P1, P2, P3. Is it clear? P0, P1, P2, P3. So these are the 4 IO port. Just see Intel 8051. These are the companies. Intel 8051. How many pins? 40 pins. How many IO lines? 32 IO lines. How many counter? 2 counter. How many RAM? 128 byte. How many ROM? 4K. Features? 128K external memory, EM. I coming into the next, but before that I am going into the architecture. So you see my copy, it will be best. All of you can see my copy. Yes, sir. Yes, sir. Just I am draw the architecture of 8051. You just follow this one. So you will be learn a lot. This is a CPU of 8-bit. Srep, this bus is reverse. Srep, this bus is reverse. Rest all are the bus actually unidirectional. Two timer or counter. Two timer or counter. RAM 128 bytes. It's a ROM. $4K. Okay. Bus controller. IO port. P0, P2, P1, P3. UART, where there is a TXD and one is RXD. All of you can see. Yes, sir. ज्यादा टफ हो जा रहा है क्या? बोलो. सर ये आप बना क्या रहे हैं? अभी इसको क्या
आर्किटेक्चर को अंजलि কে পাঠিয়ে দেখ ওটা এখন আপাতত হোল্ডে রাখো ডিডি হয়ে আসুক গো আউটসাইড $12 megahertz crystal. This is a symbol of crystal, and this is a capacitor 10 to 50 picofarad capacitor. This is also 10 to 50 picofarad capacitor. Okay. There is an interrupt controller. Interrupt controller. Only one interrupt are coming into the CPU. Two interrupts are coming from the external. These are the external interrupt. External interrupt. You know, 3 from the internal interrupt. From wrong. This is the architecture of 8051. It's clear to all? सर इस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? Architecture of 8051. जैसे architecture of 8085, architecture of 8086 की हो, architecture of 8051 इसको भी 10 बार पिक्चर बनाना, ये भी आएगा 100%. ओके सर. ये ब्लॉक हमारा थोड़ा डिफरेंट हुआ, थोड़ा और इधर हमारा जगह स्पेस नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करने से ऐसा ब्लॉक इधर में भी हम कर सकते थे, जगह नहीं मिला तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया. Clear to all of you? सर ये ओएससी सर्किट में नीचे क्या लिखा 10 to 50 हाँ बोलो अंकिता तुम्हें थोड़ा म्यूट हो जाओ. हाँ बोलो. सर ये जो ओएससी सर्किट है नीचे में, हाँ ऑसिलेशन सर्किट, उसको ओएससी सर्किट हाँ बोले. ऑसिलेशन सर्किट सर. हाँ. हाँ उसमें जो 10 to 50 है वो पीएफ लिखा हुआ है सर. पीएफ पिकोफैराड. हाँ पीएफ सर. यस सर. Picofarad. In general, we are using 33 pf. UART क्या है सर? हम बोलेंगे, अभी तो शुरुआती हुआ है. पिक्चर देखो, ड्रॉ कर लिए हो ना? Can I proceed? यस सर. शुरू करते हैं इधर से. टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितना? 1 मिनट सर, जरा सा. 120. ये बीच में वाला क्या है सर? कौन सा बीच वाला? कैपेसिटर के दोनों के अलावा वो बीच वाला क्या है? ये सर. ये 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल. 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल घंटा. 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल दिखाएंगे हम. हमारे पास तो अभी नहीं है, दिखाएंगे. जस्ट लाइक ए कॉइन, 2 पिन रहता है उसका. सर लेफ्ट में टॉप में क्या लिखा हुआ है दोनों लाइन का बीच में सर? एक्सटर्नल इंटरप्ट. इंटरप्ट कंट्रोलर एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट. 2 इंटरनल एक्सटर्नल आ रहा है, एक ओके एक्सटर्नल सर. इंटरनल आ रहा है.
शुरू करते हैं इस ब्लॉक से, करे ओके सर, ना वेट करे। हो गया सर, डन सर। कितना मेमोरी कैपेसिटी है? 64 KB into 2। 128। डिवाइड करके बोलो, 64 केवी किसके लिए, 64 केवी किसके लिए? अच्छा हाँ हाँ, सर प्रोग्राम 60 सर मेमोरी प्रोग्राम और डाटा। RAM मेमोरी सर, और बोलो। प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। सर 64 किलोबाइट। 64 हाँ बोलो। प्रोग्राम मेमोरी, 64 किलोबाइट डेटा मेमोरी। हाँ, ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर रोम आता है और डेटा मेमोरी के अंदर रैम आता है। 64 किलोबाइट के अंदर 4 किलोबाइट इंटरनली है। इफ यू नीड some microcontroller in 8051 also, 8K also available, 8K is also available, 4K available, 8K available, but you need more, then you are connected externally. externally कैसे कनेक्ट करोगे? से मेमोरी इंटरफेसिंग है, वो हम बाद में दिखाएंगे। मगर तुम ये सुन लो, इंटरनली 4K है हमारा। 4K मतलब लगभग तुमको 4000 के ऊपर तुम लाइन लिख सकते हो प्रोग्राम का। बहुत बड़ा प्रोग्राम, मतलब हमारा लाइफ में 2-4 बार ही आए थे ऐसा मौका, जो हमको बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करना पड़ा। जैसे हमारा एमटेक का प्रोजेक्ट, हम कभी टाइम मिलेगा तो हमको दिखाएंगे तुम लोगों को। 72 पेज का प्रोग्राम मैंने लिखे थे, 72 पेज ओनली, मतलब पूरा एक ही प्रोग्राम है 72 पेज, मतलब कितना लाइन होगा सोच लो। सिर्फ प्रोग्राम ही इतना मोटा था, तो पार्ट बाय पार्ट मैंने लिखे थे, पूरा 72 पेजेस का एक प्रोग्राम था। तो वो लिखने के लिए हमको बाहर से मेमोरी लगाना पड़ा था। मगर ऐसा छोटा मोटा टेम्परेचर मेजरमेंट, वाटर लेवल मेजरमेंट, ऐसा के लिए सब 4K इज मैक्सिमम, वो भी नहीं लगेगा, 1K के अंदर हो जाएगा, 4K तो बहुत दूर की बात है। तो 4K मेमोरी इज सफिशिएंट फॉर यू। सो 4K मेमोरी लगता नहीं है, 4K इसलिए 4K दिया है, नहीं तो चिप का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बेकार फालतू मेमोरी वेस्टेड होगा, कोई काम में नहीं आएगा, बेकार मेमोरी वेस्ट होगा। तो इसलिए 4K दिया गया है। तुमको चाहो तो तुम एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। ROM मतलब यू रीड ओनली मेमोरी, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। दैट्स व्हाई देखो एरो नीचे की तरफ है, नॉट ऊपर की तरफ। ये यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ इधर से आ सकता है, जा नहीं सकता है। इज इट क्लियर? और बाकी सारा में आना जाना दोनों पॉसिबल है, आना जाना दोनों पॉसिबल है, आना जाना दोनों पॉसिबल है सारा में। सिर्फ इसमें रोम में सिर्फ आएगा, जाएगा नहीं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ऊपर वाला एरो का क्या काम है फिर? ये 3 को ऊपर एरो वाला से एरो का, निकला है। हाँ, ये इंटरप्ट जनरेट करता है, इंटरप्ट जनरेट करता है। ये बास नहीं है, ये कंट्रोल सिग्नल जैसा है, जिसे इंटरप्ट जनरेट करता है। हम आएंगे इस ब्लॉक में, जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? पहले इधर जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट Yes, क्लियर sir. टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Next is RAM. RAM is a 128 bytes. RAM is a 128 bytes. RAM का क्या फंक्शन है? 128 बाइट्स का ना, ये है जस्ट लाइक ए डेटा मेमोरी, जस्ट लाइक ए डेटा मेमोरी। इससे तुम और भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मगर 128 बाइट्स इज सफिशिएंट। डेटा उतना हमारा स्टोर करने का होता नहीं है, होने से हमको बाहर मेमोरी लगाएंगे। 128 बाइट बहुत, 128 बाइट का हर एक का अलग अलग फंक्शंस है। दैट विल बी डिस्क्राइब टुमारो, टुडे इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल रैम स्ट्रक्चर तब हम बताएंगे। टू टाइमर और काउंटर, टू टाइमर और काउंटर, टाइमर 0 और टाइमर 1। क्या फंक्शन है टाइमर 0 एंड टाइमर 1 का? इसको बोलते हैं टाइमर और काउंटर, टाइमर और काउंटर, टाइमर और काउंटर। इज इट क्लियर? Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. ये ना कुछ नहीं है, टाइमर काउंटर हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे। 16 बिट टाइमर काउंटर, जस्ट हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जब काउंटिंग करना होता है, जैसे कोई डिले काउंट करना है, तो हम लोग टाइमर एंड काउंटर को इस्तेमाल करता है। जैसे टाइमर 0, टाइमर 1 क्या काम में आएगा, क्या फंक्शंस करेगा, इसका हम लोग पूरा डिटेल्स हम लोग निकालता है। कैसे? मान के चलो
हमारा टाइमर 0 टाइमर 1 में हमारा 16 बिट का टाइमर है। 16 बिट का टाइमर में हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो हम एक डिले देंगे जो 10 सेकंड का डिले काउंट करना है, तो 10 सेकंड का डिले काउंट करके वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा और एक एलईडी ऑन करेगा। तो ये सब के लिए टाइमर एंड काउंटर यूज कर सकते हैं। तुम लोग भी कभी कभी टाइमर और काउंटर के हिसाब से काम किए हो। कभी जब चाइल्डहुड में तुम लोग लुक्का छुपी गेम खेलते थे, उस टाइम में 1 से 100 काउंटिंग करना कोई किया नहीं है? यस सर। यस सर। तो वो दिस इज जस्ट लाइक नथिंग बट ए टाइमर और काउंटर। अभी भी तुम लोग टाइमर और काउंटर के हिसाब से काम कर रहे हो, क्यों बोलो तो? तो घड़ी देखते हैं बस। एग्जैक्टली, घड़ी देख रहे हो कब 2 बजेगा, कब से छोड़ देगा। ये सर कब नो, 2 बजे। इज इट क्लियर और नॉट? थैंक यू फॉर झूठ नहीं बोला, सच बोला। हाँ सर। तो इसीलिए अभी भी टाइमर काउंटर के हिसाब से काम कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट, UART, फुल फॉर्म यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। फुल फॉर्म यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट। ये सीरियल कम्युनिकेशंस में यूज होता है। सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन में मैंने पहले बार बोला था ना तुमको। सीरियल कम्युनिकेशन होगा जब बहुत दूरी में डिस्टेंस होगा दोनों का, तो सीरियल कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा। जैसे TXD से एक एक करके बीट जाएगा ट्रांसमिशन, एंड RXD से एक एक करके बीट आएगा। इन दोनों का काम है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट, UART का। ये है फुल डुप्लेक्स। जानते हो फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स किसको बोलते हैं? बोलो। बोलो। जस्ट लाइक ए सिंप्लेक्स, दिस इज ए सिंप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन। हम बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। जस्ट लाइक ए टीवी, जस्ट लाइक रेडियो, लाइक दैट। इज इट क्लियर? वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन, जस्ट जैसे हमारा क्लास। नो सर। तो ये वन वे कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। हम बोल रहे हैं हाँ, बोल रहे हैं हाँ, ना तो ना, तो वन वे कम्युनिकेशन। इट्स टू वे कम्युनिकेशन सर। टू वे कम्युनिकेशन तो कभी होता ही नहीं है। टीवी का सामने आकर तुम बोलना ये झूठ बोल रहा है। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। कॉलेज से हमको कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी हमारे कॉलेज के बारे में अच्छा बोल रहा है, तो वो उधर से सुन नहीं पा रहा है। जस्ट लाइक वन वे कम्युनिकेशन, राइट? You know, But sir, you are not a TV or not a radio. obviously sir, कभी तो तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ, हम सिर्फ बोलते ही जाता है, तुम लोग हाँ No, हाँ कुछ sir. भी नहीं। तो इसलिए वन वे कम्युनिकेशन, इससे सिंप्लेक्स। सोनम क्या बोल रहा था? तुम बोलते भी हो? ये सर हम लोग तो बोलते हैं। बहुत कम, बहुत कम। इतना वही- फीडबैक में हमारा क्लास करने का मजा ही नहीं आता है। अच्छा, हम चाहते हैं तुम लोग ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस करो, हैं? समझ में नहीं आए तो बोलो। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये क्या क्लास है भाई? समझ में कुछ तो आ नहीं रहा है, सिर्फ हाँ में हाँ लगा दो, है ना समीर? आस्ते सर आस्ते। हर घड़ी देखते जाओ कब 2 बजेगा। आज पंडित उत्सव नहीं आया। No, sir. पंडित उत्सव नहीं आया, जो भी है। उत्सव कहीं गया हुआ सर एक्चुअली सर। ओ, देखा स्टूडेंट लाइफ में जा भी सकता है। अभी 1 साल बाद क्या होगा ठिकाना नहीं है, अभी जा रहा है घूमने। चलो, क्या बोल रहा था? वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज सिंप्लेक्स। नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स। मतलब जब तुम बोलोगे हम सुनेंगे, हम जब बोलेंगे तुम सुनोगे। दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। लाइक वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में देखना, कभी कभी तुम लोग कोई मूवीज देखना तो ओवर एंड आउट बोलता है। ओवर एंड आउट मतलब हम इतना देर तक ट्रांसमिट किए, अभी हम रिसीविंग मोड में जा रहा है, उसके बाद एक स्विच दबा देता है, मतलब नाउ यू आर इन रिसीवर मोड। Whenever anyone is transmit,
other people all are in receiving mode. No one can transmit, only receiving mode. So एक ही बात करेगा, बाकी सारा स्टॉप रहेगा. ये है one way you know half duplex and full duplex. Full duplex मतलब कॉलेज में both side communication, both side communication like mobile phone, like दोनों हम दोनों चाहता है साइड से हमारा, बोल रहे हैं. हाँ दोनों साइड से बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, सुने ना सुने दोनों का एक साथ ट्रांसमिट रिसीव सब कुछ हो रहा है. तो ये है फुल डुप्लेक्स. सो ये है फुल डुप्लेक्स. इट्स कॉल्ड UART. इट्स अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ओके, इट्स अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. हाउ मेनी पोर्ट्स? P0, P2, P1, P3. How many ports? 4 4 ports. Each are 8 bit wide. Each are 8 bit. So how many pins? 32. Right? 2. सर beside P0 के बाद P1 होना चाहिए. देखो मैंने P0 के बाद क्या लिखा है? P2 लिख दिया. हाँ, कोई गलती से लिखा ना? गलती से लिखा है क्या नहीं? नहीं सर. कुछ ना कुछ तो रीजन होगा. रीजन हम उतना होगा. पूर्वक थोड़ी है. इन दोनों यूज होता है, ऐसा ही लिखता है क्योंकि इन दोनों यूज होता है एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस के हिसाब से. एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस के हिसाब से यूज होता है P0 एंड P2. There are 4 IO port, input output port. There is a one bus controller which is control all the buses. There is a oscillation circuit which is generate the clock from the crystal oscillator and given to microcontroller, given to the CPU. Clock means something like that. Crystal just like a गट्टा. दिखाएंगे हम लोग कभी जब माइक्रोप्रोसेसर का किट दिखाएंगे. 2 पिन का होता है, एक कॉइन का जो कलर है ऐसा कलर में होता है. नेक्स्ट है इंटरप्ट कंट्रोलर. इंटरप्ट कंट्रोलर का क्या काम है? हमारा क्लास में तो हम चाहते नहीं है, मगर कोई क्लास में कर सकते हैं. किसी का कोई क्वेश्चंस है, किसी का क्वेश्चन है तो प्रीति का थ्रू आना. प्रीति तो एकदम चुपचाप है, तो प्रीति का थ्रू आना. क्यों प्रीति का थ्रू बोला मैंने? प्रीति आएगा भी नहीं, और प्रीति आएगा तो कुछ बोलेगा भी नहीं, तो क्वेश्चंस भी आएगा नहीं. यस प्रीति? सर मतलब इसीलिए मैंने उसको इंटरप्ट कंट्रोलर बनाया. क्यों? प्रीति के पास मान के चलो 10 क्वेश्चन आया, वो हमको पूछेगा ही नहीं, तो हमको आंसर देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. तो प्रीति को मैंने बनाया इंटरप्ट कंट्रोलर. तो इंटरप्ट कंट्रोलर के अंदर तुम लोगों का जो जो क्वेश्चंस है वो आएगा, और प्रीति उससे एक एक करके हमको भेजेगा. जैसे मैंने पहला दिन बोला था अंकिता इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. क्यों? नहीं सर, मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी था. ओ, किसको ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया था? ओ, अंकिता का पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी था. अभी तो सीएम चेंज हो गया ना. अभी तो सीएम चेंज हो गया. किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया था हमारा याद नहीं है, जो भी है. मुझे दिया. जाई को दिया था. तो जाई इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. सारा जन क्वेश्चन करेगा प्रीति के पास, मगर प्रीति एक एक करके अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी हमको भेजेगा. हम उसके आंसर दे, उसके बाद दोबारा दूसरा भेजेगा. देखो इंटरप्ट कंट्रोलर के पास 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट आ रहा है बाहर से, 3 इंटरप्ट इंटरनल आ रहा है, 3 इंटरनल इंटरप्ट कंट्रोलर के पास. उससे सिर्फ एक इंटरप्ट सेंडिंग इनटू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग. प्रीति के पास सारा जमा होगा, प्रीति एक एक करके हमको भेजेगा. तो एक एक करके हमको भेज रहा है, सो हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं. एंड 8-bit CPU ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्रोसेस कंट्रोल. Optimization for all process control. Is it clear? Is it clear to all? Yes sir. Yes, Yes, sir. सर तो क्या इसका भी रॉम सिर्फ 3 तरह का ही इंटरप्ट भेजेगा? तीन इंटरनल इंटरप्ट. हम नाम नहीं बताया क्योंकि इंटरप्ट एक चैप्टर है, हम बाद में बताएंगे. अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं. ओके सर. तो एक्सटर्नल इंटरप्ट है. जब हम पिन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तब देखोगे तुम लोग 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट है, INT0 INT1. अभी बोलने से तुम लोगों के ऊपर बहुत ऊपर से जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे. सारा कुछ इन डिटेल स्मॉल चीज आई विल बी डिस्क्राइब. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay.
सो इसको छोड़ना पड़ेगा। वो अभी घड़ी देख रहा है, 48 बज गया है। क्या नाम है हमारा? समीर। सर नीचे वाला एरो जो है इंटरनल कंट्रोलर का, तो उसमें जो डायरेक्ट आपका सीपीयू में इंटरप्ट भेजेगा। कौन सा में? नीचे वाला, हाँ हाँ। एक एक करके भेजेगा। प्रीति का क्या काम है सोचो। ये प्रीति का काम जो है इंटरप्ट कंट्रोलर का वही काम है। प्रीति के पास सारा तुम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो सब प्रीति के पास करोगे। प्रीति क्या करेगा, एक साथ सारा 50 क्वेश्चन हमको नहीं दे देगा, एक एक करके भेजेगा देगा। वो भी जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसको देगा, उसके बाद प्रायोरिटी ऐसे करके देगा। पहले सब कुछ कलेक्ट करेगा एक साथ, उसके बाद ऐसा एक बात एक नहीं है, करके ऐसा बात नहीं है। जब जिस टाइम में आया उसी टाइम में एक एक करके दिया। मान के चलो एक साथ 4 आया, 5 आया, एक साथ एक भी आया, तो जो आया उसका तो प्रायोरिटी का कोई बात ही नहीं है। किया है तो उसको ही भेज देगा। राइट? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो समीर को और हम प्रॉब्लम में ना फेल के हम क्लास छोड़ रहा है। Tomorrow will be the 2 o'clock. I will be send the link today. And Ankita, you send me the attendance. Now is the 18 student. Okay. हमारा अटेंडेंस मत देना, मत देना सर 20 दिखा रहा था। ठीक है? सब वीडियो सेंड कर दीजिएगा। वीडियो तो कल का भी दे दिया। टुडे also will be सर given. आज वाला भी दे देंगे। पढ़ाई करो शुरू से। देखो माइक्रो कंट्रोलर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सीख जाओगे ना तो बहुत काम में आएगा, बहुत ही काम में आएगा, बहुत काम का चीज है। घर में बैठ के बहुत कुछ बना सकते हो। ये जो तुम लोग रोबोटिक्स करते हो तो तुमको खेल जैसा लगेगा, और इंटरेस्ट भी मिलेगा तुमको बहुत कुछ। खुद से बनाने से इंटरेस्ट भी मिलेगा बहुत कुछ।